Hello children, how are you? I hope you all are fine and have completed the previous chapters and watched the videos also. So today we are going to start again with English Grammar Standard 8th, that is chapter number 9, comparative and superlative comparison. Okay, so now I hope you are aware with this topic, because from the previous classes you all are learning about this topic, that is comparative and superlative degrees. So let's move on to the explanation for this, and some more details are added in this chapter. So let's begin with that. In this, two sentences are given over here, that is Kashmir is the most beautiful place that I have ever visited, and they sell the best scarves in the market. Now in this you can see before the highlighted word the is there. So I have explained you about this, that when the comes before the blank you have to use the superlative form of the word which is given in the bracket. Now in this there are three types of degrees over here. So that three degrees are, one is positive, second is comparative, and third is superlative. Now what rules you have to follow in this use of this all the three degrees? First, before moving on to the explanation of the previous this one, after coming exercise, I'd like to show you a video so that the idea will be more clear to all of you. So let's watch the video first. On today's lesson, we'll be covering comparatives and superlatives. We will learn about what comparatives and superlatives are, how to properly use comparatives and superlatives, and some exceptions. However, before we start, I need you to know something. Every time you compare in English, you must always use than instead of that. For example, she is more beautiful than flowers. Going to the beach is better than going to the mountain. I prefer soda than orange juice. See? Easy peasy. Let's start now. What are comparatives and superlatives? Well, comparatives are adjectives that compare only to the things. It's like comparing cartoons and TV series. How to use comparatives. First, don't forget comparatives are used only to compare two things. The clue word for comparatives is more, at, er, which is an abbreviation of more at the end of the adjective. And if the adjective is too short, just create the last letter. Then, you would say something like, I was born first than my brother, so I am older than him. What you cannot say is, I am more old than him. This is not correct. It's like mixing the word more with the adjective. Let's make an example. Guess you're running against a friend, only the two of you. And then, you win. So, what did you say to your friend? Then, you tell your friend, I am faster than you, which is correct. What you cannot say is, I am more fast than you. This is not right. Well, moving on. Superlatives are adjectives that compare more than two things. Like comparing three people to see which one is the oldest, the youngest, and the tallest. How to use superlatives. First, don't forget superlatives are used to compare more than two things. The clue word for superlatives is most, at est, which is an abbreviation of most at the end of the adjective. And if the adjective is too short, duplicate the last letter. Let's make an example. Now, let's suppose you're running against many friends. And then, you win. So, what do you say to your friends? Then you tell your friends, I am the fastest runner, which is correct. What you cannot say is, I am the most fast runner. This is not right. Now, we're almost done, so let's see the exceptions. First, if the adjective is too long, more than two syllables, then you cannot use comparatives and superlatives. For example, Spanish grammar is more difficult than English grammar, or, since she's wearing the past
ever seen. Second, if the adjective describes an absolute state, like perfect, unique, and uniform, you cannot use comparatives and superlatives. For example, Maggie had the most perfect score at the exam. And there are some irregular adjectives that change with comparatives and superlatives. There are five of them, which are good, bad, far, little, and many. And you have the comparative form and the superlative form. Well guys, my advice for you today is watch English movies with English subtitles. This is really gonna help you out. Thank you guys. See you next Friday. So I think by watching the video, the idea about comparative and superlative, how to use it, it is more clear to you all. Now let's begin with the explanation. When we use an adjective to compare two or more things, we use the comparative और superlative forms, which was shown in the video कि अगर आप दो चीज़ों को compare करते हो तो you have to use comparative form, and more than two things you are comparing तो आपको superlative form use करना है. So the comparative and the superlative forms of many adjective take the ER and the EST form. Comparative degree में हम लोग use करते हैं ER या फिर more, depends on the word, and in superlative we use EST and most. So here two examples are given. Long, this is the positive form, longer comparative and longest superlative. वैसे ही sharp, sharper, sharpest ऐसे. Usually longer adjective take more and most. तो longer बड़े adjective होते हैं more than 2 syllables, उसमें आपको more और most लगाना है. जैसे intelligent, syllables means pronunciation कि 3 parts में वो pronounce होता है, 2 से ज़्यादा parts में. That time आपको use करना है more और most. So intelligent, more intelligent and most intelligent. Here in this exercise they have given the prices of the TV sets. Okay. So using these words in the bracket you have to form sentences. So this you can do it orally. One example is given over here. जैसे Scanovision is costlier you can use, means comparative में than, और जब आप comparative degree use करते हैं that time आपको than का use करना compulsory है. Than means than word अगर दिया है sentence में तो it is comparative degree. The other 3 television set, वैसे ही वापस they have used the superlative form, और superlative form में हमेशा वो जो word होता है उसके आगे जो आप डिग्री चेंज करते हो जिस word की उसके आगे the compulsory होता है. That time it is called superlative degree. तो Scanovision is the costliest television set, and in that you can use one more word for that. If you are using expensive तो उसमें आप more लगाओगे और यहाँ पे most superlative में हो जाएगा. So let's move on to the second exercise. In that, before that, one explanation for the second exercise is given over here. The अब जब ये double the आता है that time आपको क्या use करना है. Here the formation is also given. I have underlined it. So let's begin with that. We use the to express comparison and contrast using comparative adjective is in parallel clauses. Now this structure is used to show proportionate increase or decrease. मतलब किसी चीज़ में कुछ increase और decrease होता है वो दिखाने के लिए आप ये use करते हो. In this see the when single the is there that time आपको use करना है superlative degree. But this way two times the is coming in a single sentence, that time you have to use in between comparative degree. जैसे इसका formation दिया हुआ है, we use the form कैसे use होगा, उसका form कैसे होगा, the प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव दिया है उसका कंपैरेटिव फॉर्म प्लस बीच में क्लॉज आ जाएगा, फिर से द होगा, अगेन कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव and plus clause. This will be the formation of that sentence. See here the example is given. I'll explain you so that the idea will be more clear to you all. So the more, see the came, then more challenging, you used comparative degree, it is clause came, and again the आके more I like it, comparative degree, and then I like it, clause आ गया. वैसे ही the older we grow, the के बाद ये comparative degree, then clause,
again the comparative degree and again clause. तो the older we grow the wiser we become. ऐसे जब 2 टाइम the यूज हो रहा है, that time in both parts fill up you have to use comparative degree of the words which are given in the bracket. Now in this exercise the same rule will be followed. You have to complete the sentences with the correct forms of the words in the bracket. अब इसमें दिया है द हार्डर यू स्टडी फॉर दिस टेस्ट अगेन द बेटर, मतलब हार्ड का हो गया कंपैरेटिव डिग्री हार्डर यहाँ पे, एंड गुड का हो जाएगा बेटर यू विल डू. सेम वे द सेकेंड वन, शी डजेंट रियली लाइक्ड एरिएटेड ड्रिंक्स, सो द फर्स्ट वर्ड आ जाएगा स्मॉल का स्मॉलर. अ बॉटल यू बाय द हेल्दियर, हेल्दी का क्या हो जाएगा हेल्दियर, इट विल बी फॉर अस. देन the third one is our neighbor is being very inconsiderate. It seems that the late ka later, it is at night, the loud ka louder he plays his music. Now the fourth one is he spent a year in Mexico and loves spicy food. The hot का hotter, the food is the much का comparative form हो जाएगा more. ही लाइक्स इट. इसी तरह से आप लोग को फर्स्ट वर्ड फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म एंड सेकेंड वर्ड सेकेंड ब्लैंक में कंपैरेटिव फॉर्म बना के आपको उसमें ऐड करना है. सी द फिफ्थ वन, ऑफ कोर्स यू कैन कम फॉर द पिकनिक, द मच का मोर, द मेरियर, मेरी का मेरियर हो जाएगा. देन द सिक्स्थ वन इज शी विल बी वेरी हर्ट व्हेन शी लर्न्स अबाउट इट. उसके बाद सी ईयर इन दिस ब्रैकेट लेस जो है वो वर्ड ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में, इसका पॉजिटिव फॉर्म होगा लिटल, सो उसका कैसे हो जाता है लिटल लेस लीस्ट. तो ऑलरेडी ये लेस कंपैरेटिव में दिया है तो सेम वर्ड आप यहाँ पे ब्लैंक में लगाओगे, द लेस शी नोज अबाउट इट, द गुड का हो जाएगा बेटर. देन सी द सेवेंथ वन, ही हैज़ 6 large dogs to protect his property. द बिग का बिगर, द डॉग, द डैश ही फील्स, सेफ का सेफर ही फील्स वैसे. देन एट्थ वन इज यू मस्ट ड्राइव स्लोअर इन क्राउडेड एरियाज, द फास्ट का फास्टर, यू ड्राइव इन द सिटी, द प्रोबेबल का मोर प्रोबेबल, इट इज दैट you will have an accident. Now I hope this exercise is clear. It is very easy, nothing you have to do, just you have, when the 2 times it is been given, that time in both the blanks comparative degree ही आपको use करनी है उसमें. Then let's move on to the next part. as and as, जैसे द में comparative यूज़ कर रहे हो, as and as में positive form आ जाएगा. So in that we use as to compare between objects that are similar objects होते हैं, उनको compare करने के लिए, दो objects को similarity उन दोनों की दिखाने के लिए we use this as, मतलब ये एक चीज़ है वो उसके जैसी है वैसे, to each other in some way. So we use the form here is as plus comparative adjective means यहाँ पे जो adjective दिया हुआ है उसका positive form plus as, ऐसे use करना है. Now next see the example how it is being used, means bracket में crowded दिया होगा, you just have to put the bus is as crowded as the metro, मतलब ये बस और मेट्रो में they are showing the similarity, so you are using the word as and as with the adjective. तो positive form as it is वो word रहेगा वहाँ पे. Next example is Neetu is as old as Ajay, again both are being compared and similarity is shown. और अगर नेगेटिविटी है that time how you will use, we use not as in between positive form and as to make comparison between two things that are not equal, जो सेम नहीं है उसका फॉर्म होगा we use the form not as, आगे not लगेगा, as प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव कंपेयर करने के लिए यूज हुआ उसका पॉजिटिव फॉर्म प्लस अगेन as. See the example here, it is given the lemon is not as sweet as the orange and the bag is not as big as the suitcase. See आगे खाली not लगा दिया, both side as, और जो ब्रैकेट में वर्ड दिया होगा वो आपको बीच में यहाँ पे लगा देना है.
देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू दिस ओनली. ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जस्ट आपको आगे पीछे जैसे दिया है, नॉट दिया है तो नॉट एस करके फिर वो वर्ड और एस लगा देना, और अगर नॉट नहीं दिया है तो एस दोनों साइड आएगा और बीच में वो वर्ड आ जाएगा. इट्स वेरी इजी दिस एक्सरसाइज. जैसे द ब्लू कार इज एज फास्ट एज द रेड कार, इसमें ओनली फास्ट इज गिवन, so negativity is not there. अब look at the second one. in that bracket में आपको दिया हुआ है not और tall, तो यहाँ आप कैसे लिखोगे? not as tall as, ऐसे होगा. then the third one, the violin is, see students यहाँ पे एक printing mistake है, वहाँ पे low नहीं है, low को कट करके आपको heavy लिखना है. so here कैसे हो जाएगा? not as heavy as. अगेन द नेक्स्ट वन बैड दिया है तो एस बैड एस. नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक तो एस ऑप्टिमिस्टिक एस, ऐसे आंसर हो जाएगा. अब सिक्स्थ वन नॉट दिया हुआ है, नॉट और हॉट, तो कैसे आप लिखोगे? नॉट एस हॉट एस. देन सी द सेवेंथ वन, डेलीशियस दिया हुआ है, सो हाउ द सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी? एस डेलीशियस एस. and the last one again not is given, so not as sweet as. Okay, now let's move on to the next exercise. in this just you have to put than or as. see how you will make the comparison, how you can identify कि आपको क्या word इसमें use करना है. if the word इस sentence में अगर उसमें comparative degree use हुआ है वो adjective का, that time आप than लगाओगे, और अगर सेम उसका सेम सिमिलैरिटी बता रहा है दैट टाइम यू विल यूज एस. सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज डन फॉर यू, हियर द वर्ड टॉलर इट इज इन कंपैरेटिव फॉर्म. सो कंपैरेटिव के साथ आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? एस आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली, दैट टाइम यू विल यूज द वर्ड दैन. नाउ लुक एट द सेकेंड वन, शिरीन्स हैंड्स वेयर एस. अब इधर एस यूज हुआ है, एस कोल्ड, उसके साथ क्या यूज करोगे? एस आईज. यस, दैट वे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. इन दैट द बेबीज आईज आर द सेम कलर. नाउ सी यहाँ क्या यूज हुआ है? भले ही दो बार एस नहीं आएगा, बट वंस सेम इट इज गिवन, मतलब वो सिमिलैरिटी बता रहा है, सेम कलर, तो उसके साथ आप यूज करोगे एस योर्स. सी इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि दोनों साइड एस होगा, बट फ्रॉम द सेंटेंस उसमें सिमिलैरिटी व्हेन इट इज शोइंग दैट टाइम यू हैव टू यूज द वर्ड एस. एंड देन कब यूज करोगे? ओनली व्हेन द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव इज इन कंपैरेटिव फॉर्म. जब खाली वो कंपैरेटिव फॉर्म में होगा तभी ही आपको देन का यूज करना है, अदरवाइज एस. नाउ हियर फोर्थ वन, सी हियर द सी वॉज एस स्टॉर्मी एस एक्सपेक्टेड. अभी इसमें दोनों साइड एस आ गया. Now in fifth one, he eats more junk food. Now here more is the comparative form, इसीलिए आप यहाँ क्या लगाओगे? than is good for him. Now sixth one, don't forget to take your admit card as I did last year. अगर अब ये सिमिलरिटी उसके साथ कंपेयर कर रहा है तो आप as यूज करेंगे. Now the seventh one is Malini is going to join us as was agreed last week. जैसे उसने पहले किया था इस वजह से. Now the last one is they sent more food. Again यहाँ पे more का यूज हुआ है तो आप यूज करोगे, दिस इज द कंपैरेटिव फॉर्म, तो आप यूज करोगे than we had ordered. Now let's move on to the next exercise, that is E exercise. In this what you have to use? You have to complete the sentences with the correct forms of the adjectives in the bracket. You may need to add some words. Now see, you have to first identify in this which degree you are going to use. First I'll tell you how you will identify. I have underlined some words in this. You can see the exercise in this, how you will identify. For that I have underlined the words. When the word than is there, that time directly जो word है उसका comparative form आपको लिख देना है. Now see in this I have underlined in the world, मतलब पूरे world में से they are doing, see more than 2 or 3 things they are comparing. When they are comparing 2 things,
तो आप यूज़ कर रहे हो कंपैरेटिव, और ये पूरे वर्ल्ड में मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द विच डिग्री, द नहीं दिया होगा तो द आपको ऐड करना है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है। एंड अगर एस दिया है एंड देन भी नहीं है और पूरे दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दैट टाइम पॉजिटिव डिग्री you have to use. Now let's start with the first one. See here, than is used. My sister has a tidier room than me. Now both of their two people's room are compared, so tidy का हो जाएगा tidier comparative degree. Now second में England is dash than Australia. Again than आ गया, तो आप स्मॉल का कौन सा डिग्री यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, स्मॉलर. अगेन नेक्स्ट थर्ड वन, आई एम डैश नाउ देन आई वॉज यस्टरडे. अगेन देन आ गया, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर. नाउ द फोर्थ वन इज ही थिंक्स चाइनीज इज डैश लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज द सुपरलेटिव फॉर्म. और यहाँ पे द नहीं है, सुपरलेटिव फॉर्म में हमेशा द आता है आगे एडजेक्टिव के स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा द मोस्ट डिफिकल्ट. देन बार्सिलोना प्लेड डैश देन रियल मैड्रिड यस्टरडे. नाउ देन आ गया, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर आ जाएगा यहाँ पे. नाउ सी द सिक्स्थ वन, कैट्स आर नॉट, अब नॉट दिया है डैश एस डॉग्स. अब एस आ गया तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? पॉजिटिव. सो आगे भी एस लगा दोगे आप, एस इंटेलिजेंट एस डॉग्स. देन सेवेंथ वन इज वी हैड लंच एट डैश रेस्टोरेंट इन द सिटी. अब पूरे सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन इसका सुपरलेटिव फॉर्म आपको यहाँ यूज़ करना है द के साथ, द बेस्ट. नाउ द एट्थ वन इज डैश डेजर्ट इज ऑफ ऑल. अगेन ऑफ ऑल, पूरे मतलब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है, तो अगेन सुपरलेटिव फॉर्म द हॉटेस्ट हो जाएगा, हॉट का. डेजर्ट ऑफ ऑल इज द सहारा एंड इट्स इन अफ्रीका. द लास्ट वन इज who is dash student in the class. Again full class they are comparing, so you have to use superlative form of talkative, the most talkative, that way. Now the next exercise, you have to complete this sentence with the comparative or superlative forms of the adjective in the bracket. Now in this mix up is there, so the don't see एकदम खाली the देख के superlative form लगा देना, ऐसे नहीं. if the word the is repeating, तो मैंने जो रूल पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि the के साथ आपको दो बार the आ रहा है तो आपको comparative form यूज़ करना है वैसे. so see the first one, this armchair is डैश देन. अब देन आ गया तो कंपेयर, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज कंपेरेटिव डिग्री, तो मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का हो जाएगा देन द ओल्ड वन. सी द सेकेंड वन, द डैश द ट्रेन गोज. देखो टू टाइम्स द इज कमिंग ओवर ईयर, तो बीच में आपको फास्ट का कंपेरेटिव फॉर्म यूज करना है, जैसे मैंने आपको उसका फॉर्मेशन बताया था, द प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव प्लस क्लॉज आएगा, अगेन द कंपेरेटिव एडजेक्टिव एंड क्लॉज. अगेन देखो यहाँ पे द आ गया, उसके साथ भी आप कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे. सो सेंटेंस विल बी द फास्टर द ट्रेन गोज द अर्लियर वी विल रीच. नाउ look at the third one, the vase in the souvenir shop was almost dash the statue. Now almost dash the statue. अब इसमें than भी नहीं है और they are not comparing more than two things, so you have to use, almost word is coming, you have to use positive degree, so as use करके आप लगाओगे as expensive as वैसे. Now the next one, in this classroom there were dash girls than boys. Now than word came, so many का comparative form आ जाएगा more. Then fifth one, अमृता is the. अब blank के आगे the आया और पीछे कहीं the नहीं है, तो young का superlative form youngest child in the family, ऐसे आप यूज करोगे. Now sixth one is telephones are dash than television sets. Again see here the word than is coming, so cheap का comparative form you will use cheaper. Seventh one,
यू आर डैश हियर देन देयर, अगेन देन आ गया, सो सेफ का कंपेरेटिव फॉर्म यू विल बी यूज्ड हियर, सेफर. नाउ फरीदा इज, ओनली इज गिवन, नो द टू टाइम रिपीटेड, नो देन, नथिंग इज देयर. हर मदर, नाउ तो टॉल का आप कैसे यूज करोगे पॉजिटिव फॉर्म में, एज टॉल एज. नाउ द नाइन्थ वन इज, दिस इज द, अब द आ गया, यहाँ पीछे कहीं द नहीं है, ब्लैंक के आगे द आया है, तो एक्साइटिंग का सुपरलेटिव फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करना हो जाएगा, मोस्ट एक्साइटिंग फिल्म आई हैव एवर सीन. नाउ सी द लास्ट वन, बिमल इज डैश उमंग. नाउ इन दिस सी टैलेंटेड दिया हुआ है ब्रैकेट में, और इसमें इज है आगे खाली, ना द है ब्लैंक के आगे, ना पीछे दैन है, और द दूसरी बार कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है. सो पॉजिटिव डिग्री आप यूज करेंगे, दैट इज एज टैलेंटेड एज उमंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट exercise of this chapter. In this what you have to do, rewrite the sentences using different degrees of comparison. एक डिग्री दी हुई है, आप इसको नेक्स्ट दूसरी डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है. So you can write only 1 degree also, or if it is possible 2 degrees. One is given, the totally 3 degrees are there. एक दी हुई है, दूसरे दो में कन्वर्ट किया है, किसी किसी को ओनली सिंगल में कन्वर्ट किया है, so that way. So your first one is already been done for you. Let's move on to the first one. I'll explain you so that it will be more clear and you can do the others also. नाउ यू नो द रूल्स कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको वो वर्ब, वो जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे आपको ध लगाना है, और कंपैरेटिव में पीछे दैन आ जाएगा. एंड पॉजिटिव डिग्री में अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो दैट टाइम आपको उसमें एस करके यूज़ कर सकते हैं, बट नो दैन, नो द एंड सेम वर्ड विल बी देयर, नो ER EST कुछ नहीं लगाना है. सो शेक्सपियर इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश. अब इसमें सुपरलेटिव में दिया हुआ है, यू कैन चेंज इट इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव. सो पहले पॉजिटिव में चेंज किया है, इसमें ऑल राइटर्स के साथ कंपेयर किया है. सो आपको जब पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो नो, हमेशा जब पॉजिटिव में आप चेंज करते हो तो नो अदर के साथ ही सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं. किसी किसी बाय चांस किसी में ही नो अदर से नहीं स्टार्ट होगा, बाकी मोस्टली नो अदर से ही स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस पॉजिटिव में. सो कैसे हो जाएगा, नो अदर राइटर इन इंग्लिश इज़, और पॉजिटिव में एज फेमस एज, और जो है वो उसका नाम यहाँ आ जाएगा शेक्सपियर. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग इट इन कंपैरेटिव फॉर्म तो आपको ER लगाना है एंड देन लगाना है. तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर राइटर इन इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सेकेंड वन, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. अब इसमें कंपैरेटिव दिया हुआ है, यू कैन चेंज इट टू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव. सी एनी अदर है तो आप पॉजिटिव में कैसे स्टार्ट करेंगे, नो अदर, नो अदर मेटल इज. अब इसमें कैसे हो जाएगा, एज यूजफुल एज आयरन, ऐसे. एंड सुपरलेटिव व्हेन यू आर चेंजिंग तो आपको ध लगा के सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है. सो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, एनी अदर की जगह ऑफ ऑल मेटल्स, क्योंकि सुपरलेटिव में यू आर कंपेयरिंग इट विथ मेनी मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, सो दैट्स वाई. Now look at the third one. Team A gets more points than Team B. Now here it is given in comparative. We are changing it to positive. So this will come in front. So Team B did not get, because Team B is not getting. Team A is getting more points. So Team B, when you are writing, you have to use did not get as many points as. You have to use as and as Team A, that way. Now see in this, China is larger than India. Again see larger, comparative दिया है, you are changing to positive. So China is larger than India. These two things only they are comparing. Now you have to change, you can change it into positive. So India आगे आ जाएगा, and when it is not there, so you have to use the word not. So कैसे sentence हो जाएगा, India is not as large as China, that way. Now see the fifth one. ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड है. सो यू आर चेंजिंग इट टू दिस वन. सी द सेंटेंस, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, पहले कंपैरेटिव में एंड देन इन पॉजिटिव.
So comparative mein how it will become? No other island in the world, because it is not there, so this is the largest, so no other, with no other you have to start the sentence. But in this no other you didn't start, because only one country was being shown over here. So here no other island in the world is larger than Greenland, that way it will become. And when you are changing it to positive, again the same type of formation will be there, only the word will change, as large as. जैसे sentence हो जाएगा, no other island in the world is as large as Greenland, that way. Now see the sixth one, air is lighter than water. अब वाटर से लाइटर है, इसमें सभी के बारे में नहीं बोला है, दैट्स वाई यू आर नॉट चेंजिंग. सी इसमें जब व्हेन इट इज गिवन फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट टाइम ओनली यू कैन चेंज इट टू सुपरलेटिव. इसमें इन द थर्ड वन, इन द फोर्थ वन, इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ सभी के बारे में नहीं बोला है, ओनली टू things they are giving, or two people, or two objects only they are showing, that's why you are not changing it to superlative, only the positive form will be there. Here in the world मतलब पूरे के बारे में बोला है, so you can change it to comparative, positive, superlative in all three forms. Okay, so how you will change? Water is not as light as air, ऐसे, because here दो चीज़ air and water दो को ही compare किया है, but in superlative what is the rule, क्या है उसमें, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, दैट टाइम यू कैन फॉर्म द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ दैट सेंटेंस. अदरवाइज आप सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ना दिए हो तो सॉरी, सुपरलेटिव फॉर्म्स इफ ओनली टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, दैट टाइम यू कांट फॉर्म द सुपरलेटिव फॉर्म. अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स दिए हो, दैट टाइम ओनली सुपरलेटिव सेंटेंस आप उसका बना सकते हैं. नाउ सी द सेवेंथ वन, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर. अब अगेन आई एंड ब्रदर दो ही जन है, तो इसमें भी सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होगा, कंपैरेटिव दिया है, यू कैन जस्ट चेंज इट टू पॉजिटिव. नाउ माई ब्रदर इज नहीं है, इसीलिए नॉट एज टॉल एज, आई का हो जाएगा मी. नाउ सी द लास्ट वन, हियर पायल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब पूरे क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन हियर सुपरलेटिव इज गिवन, you can form the comparative also and the positive form also. तो आप no other से start करेंगे, no other girl in the class is stronger, comparative उसके साथ than Payal, and the last form will be no other girl in the class is as strong as Payal. This will be the positive form. I hope this chapter is clear to all of you, and you have to write this chapter in the textbook with a pencil. I hope this chapter is easy and will be more clear to all of you. So I'll meet you in the next lecture. We'll start with the next chapter. So thank you all of you.